मैगजीन को हाथ में लेने में और उसी मैगजीन के कवर पेज पे होने में इतना सा ही तो फर्क है। वीआईपी सीट में और उसकी पिछली सीट में इतना सा ही तो फर्क है। वो जिसका मैदान ही खुला आसमान है, वही कल जमीन पर तो था। पूछोगे तो बताएगा वो पंछी, ये एक दायरे में सिमटने में और पूरी दुनिया को दायरा बनाने में बस इतना सा फर्क है। इतना कितना है? इतना है या इतना है? जो नापेगा वो जाने कि जहां धरती और आसमान मिलते हैं, नानकुर से दूर, अगर मगर शायद से दूर, वहां भी दोनों में फर्क बस इतना सा है। धरती और सातवें आसमान में फर्क बस इतना सा है। ये एक अंतर प्रेरणा है। ये हमारी, आपकी, हम सब की अंतर प्रेरणा है। एक कदम, एक छलांग, एक बाजी, एक गहरी सांस और एक ललकार खुली हवाओं में कि हाँ मैं बना हूं उन फिजाओं के लिए, कि हाँ मैं बना हूं उन ऊंचाइयों के लिए जो ऊंची तो बहुत है पर नामुमकिन भी नहीं, क्योंकि मुमकिन और नामुमकिन में बस इतना सा फर्क। धूप छांव में फर्क बस इतना सा। तो बस चलिए फ्रेंचाइज इंडिया के साथ ये फर्क मिटा देते हैं। फ्रेंचाइज इंडिया। Good afternoon, friends. A very warm welcome to our Business Opportunity Over Chai. And this special edition, Business Opportunity Over Chai, will help you to understand the greatest business opportunity that we, Franchise India, brings specially curated for you. Business Opportunity Over Chai, management by Franchise India team, Mr. Gaurav Maria, Chairman at Franchise India Group, and Ms. Sonia Chaudhary, MD at Franchise India Brands Limited. Every day, 12 o'clock, we launch a new brand to explore new business opportunity for you. So today we have invited a great iconic brand in skin and aesthetic centers, Dr. Alka Skin and Healthcare. The brands come with the experience, very vast experience in the healthcare industry. To know more about this business opportunity, I would like to invite Ms. Sonia Chaudhary to hand over this day. Over to you, ma'am. Mr. Gaurav Arora ji, I would like to invite Mr. Gaurav Arora ji also. He has a very good experience to who can come help us to know the different business opportunity in different business to picking up the right business for us. So Gaurav sir, if you wanted to add something before we start up this webinar. Yeah, sure. So thank you so much, Harshika, for organizing this business opportunity over chai session. So today we have a brand which is from the derma side and the aesthetic side of the clinical business, and they come with almost 30 years of experience, having done good work not just in India but globally. And I'd like to mention here that today they are sitting in London and they are live with us. So it shows the dedication that they have towards their business, towards their patients, and towards the vision that they have set for themselves. So before I start, I'd like to mention that how this journey started, which we have heard from the brand side. So Dr. Alka basically happens to be working with a corporate about 10 years before, while she thought that why would she basically work with a company, and why not she do something for the society, and why not she basically do something for people who are aspiring to be in business, who are aspiring to be basically getting into something which is very, very upcoming these days, because beauty and aesthetics along with derma is something that very few people are doing in the country and even the globally. So that's where she thought that she should get into the practice, and she should basically extend her technical understanding and the technical basically the confidence that she has gained over the years. And there she started this clinic on the name of Dr. Alka from Pathankot and Mohali. And today she has actually scaled up to basically her operations, her clinic operations in London. And she's been nominated as a Victoria Awardee for the all good work that she has done. And the second objective for which she thought that she should get into is that that the kind of blessings that she has got from the God that we worship,
right? She wanted that this should be given to the people for in the next generation. Why to restrict herself to only into this good work that she's doing? And hence she thought that franchising can be probably one way with which we can she can translate the entire technical knowledge that she has gained, the confidence and the goodwill that she has gained in this business. And that's how the journey began. So today we are basically glad to invite them and take the podium and talk about their vision, their mission, their growth path, all the good work that they have done, and the franchise opportunity that we have with Dr. Alka Clinic. And along with me, we have Mr. Ashok Kumar, who is going to help the brand to talk about on the financial part of the business. So I request Mr. Rajiv and Dr. Alka and Ashok to please take over the podium and talk the good words and the opportunity associated with Dr. Alka Clinic. Over to you. Hi, Gaurav, thank you so much for introduction. You have said almost everything about I need to say, and because we have been speaking a lot about how to take up the vision further. The only thing which I would like to add is one day when we're sitting about 5 years before, and we've already seen flow of lots of patients coming, and then we see our center became the last reference center in north of India, in fact for the rest of India, many occasions in fact. So we thought of to start creating cloning of these services that society would need. This is what we felt, and then the best way Dr. Alka thought would be to write a book about it, how to do those things. And then we came up with the idea of cloning, in a sense that let's first of all clone the mindset, clone the way we operate, clone the holistic way of treating the patients. So we came up with the software, and thanks to the Digital India campaign, we were able to digitize a hospital, which was the first skincare 100% paperless hospital way back in 2018, where our journey began. And then we created a software which does a self-diagnosis, which is based on AI, which is artificial intelligence, for which the Victoria Award has been nominated, Dr. Alka has been nominated for. So then we started doing a lot of research work to give an integrated system. We set up the processes, and then we started with our own journey. Let's start with ourselves, in fact. So we started from a small town, though, because we had a base there. Then we moved to England, in fact, and then government of England, UK has accepted the whole concept, and then we will be mushrooming the similar concept around the UK. So we started with Mohali, then we started a center in Goa. So we were able to find that, yes, it really works, and we are able to monitor more than 1,000 centers centrally with A, with the platform, and B, with the software. And then we thought of giving patient-friendly concepts to the people with the mindset of that we brought up with the app, which probably we give a lot of things in the hands of the patient, before reaching a clinic and post reaching a clinic, in fact. So that was a great combination we took over. And then the next challenge, which is one of our vision, is to have 100 plus centers across India. So we were browsing around, we found the best people who could really market is a Franchise India. And I'm very thankful to the entire team of Mr. Gaurav Maria, Sonia, Gaurav, Ashokji, and many others. Lots of you who are being part of in this journey as a partner in promoting the concept. And we are very glad that we are part of it. Most of the things then Ashokji will be able to explain to you about the nitty-gritty, the model, the revenue model, the things. But our mission is that we are a totally patient-focused organization. And that's the profit will follow by itself. Thank you. Over to you, Harsh. Thank you, Mr. Rajiv. I think before starting formal presentation, I would like to request Dr. Alka just to share her experience for like 2 minutes, then I can start the presentation. Thank you, Mr. Ashok, and thanks to the entire team of Franchise India that today we are here and giving us this opportunity.
So I think Rajiv has elaborated on the journey and the purpose. I just want to add one thing, that the main purpose or the main thought behind starting this whole campaign was the single thought that our center gradually became more of a referral center for the whole of North India. People were traveling as far as 300 to 400 kilometers to reach our clinic from the surrounding states, the adjoining state of J&K and Himachal. And that brought us to the idea that there are so many people who require the treatment for problems of skin, hair, and nail. So why should we not spread to other areas? Ours is a mostly a patient-focused company. We only focus on giving the best treatment to the patient, not symptom-wise, but going to the root cause of the disease. The whole approach is, a holistic approach wherein we do not focus on the disease the person is carrying, but to completely cure the person and give him and help him lead a healthy life. So with this concept, we wanted this concept to spread pan India, and that is the whole thought behind it. All other things are secondary. The business part, the profitability, the revenue, the profits, all those are secondary byproducts of this main thought. So this is the thought we want to spread to the whole of the country so that more and more patients benefit from it. And I think that's all. And I'm happy that Franchise India is helping us, helping our thought to materialize and giving it a shape. Over to you, Mr. Ashok. Thank you, Dr. Alka. So like before starting the presentation, I would like to add some more few points about the Indian market and why basically healthcare practices, especially in dermatology and cosmetology clinic center. If you look at the health infrastructure of India, like it's considered to be very poor, considering the environment, infrastructure, regulation policies. So basically, especially after pandemic, government has realized because health sector need a much more intention, they need more investment, and government is now trying to put more efforts in building a good health infrastructure across the country. Apart from that, basically, if you look, not only the government initiative, government is also promoting India to create as a global health hub. So I think that's a very great opportunity. But we, as a person, our individual responsibility just to develop the nation or to develop any infrastructure and to support our country, this cannot be achieved just only by government initiatives. We need individual initiatives. And Dr. Alka, so she is bringing up basically world-class healthcare clinic at a very reasonable price to India. So that is a very significant opportunity. And so all the franchisee partners who are going to be a part of this venture is definitely going to be a win-win for all of us. And most of all, ultimately, we are creating self-sustainable clinics and to support the society and to develop more basically social and economical development of the country. So now I will start with the presentation. So as I think Mr. Gaurav, Dr. Alka and Mr. Rajiv has already discussed about the basically detailed about the brand. So this is a UK based world-class franchise skincare and aesthetic clinic. But why Dr. Alka Skincare and Healthcare Clinic? We will look at that first. So why? Because they have developed a industry's first integrated suite for domain-specific diagnostic tool. So for any medical expert, it is not necessary is related to your like skin, or you can say vitiligo, dermatology, hair Ashok ji, problems. Yeah. Yes, जी, yes, Gaurav. I have a humble submission here कि Yeah. हम इस कम्युनिकेशन को थोड़ा सा इंग्लिश में करते हैं ताकि हमारी जितनी भी ऑडियंस है, चाहे वो यूट्यूब पे है, सोशल मीडिया, फेसबुक पेज पे है या हमें सुन रही है, तो वो सब हमारे से रिलेट कर पाए, बिकॉज जरूरी नहीं है कि
हम लोग किसी भी पार्ट ऑफ द कंट्री से ऑडियंस को केटर कर रहे हैं, ठीक है? डेफिनेटली गौरव। थैंक यू। तो हिंदी में, राइट? हाँ हाँ ठीक है गौरव, थैंक यू। तो दे हैव डेवलप्ड, मतलब उन्होंने हेल्थ केयर इंडस्ट्री, स्किन केयर एंड एस्थेटिक क्लिनिक एज ए इंडस्ट्री वर्ल्ड का सबसे पहला इंटीग्रेटेड एक AI बेस्ड सिस्टम दे हैव डेवलप्ड टू डायग्नोस द पेशेंट। और किसी भी डॉक्टर के पास सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है कि कोई भी डिसीज है, इट इज रिलेटेड टू एनी प्रॉब्लम, हाउ टू डायग्नोस इट। Doctor may take like 1 week, 2 week, it may take 3 months, or it may take 6 months to diagnose a problem, to give them right treatment. So the objective and the systems that Dr. Alka has developed, but this is not developed over the period of like few years. She has worked hard for 30 years and developed this system. So 30 साल का experience she carries, and she has developed a very advanced system that वो patient को you can diagnose it right in the first visit. जब एक पेशेंट को राइट डायग्नोसिस अगर फर्स्ट डे से मिल जाता है, डॉक्टर कैन स्टार्ट राइट ट्रीटमेंट। तो ये बहुत बड़ा एडवांटेज है किसी भी क्लिनिक के लिए। और आज की डेट में आप किसी भी बड़े हॉस्पिटल चेन को देखो, चाहे वो कितना भी बड़ा इंटरनेशनल हॉस्पिटल या कोई भी चेन हो, इंडिया के अंदर भी दे टेक्स लाइक टाइम। सेकेंड थिंग, द बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ दिस सिस्टम कि जो ह्यूमन एरर है, इट कंप्लीटली रिमूव्स द ह्यूमन एरर। तो डायग्नोस में रॉन्ग डायग्नोसिस के चांसेस है, तो उसको कंप्लीटली एलिमिनेट कर दिया है सिस्टम ने। और जो अपने क्लिनिक में वो मेडिकल इक्विपमेंट और जो मशीनरीज वगैरह यूज करते हैं, दीज आर बेसिकली इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स इन वेरी हाई क्वालिटी स्टैंडर्ड मशीन्स दे यूज। और अभी इंडिया में इनके 3 क्लिनिक है जो रनिंग सक्सेसफुली, एक आपका पठानकोट, दूसरा मोहाली और तीसरा गोवा में। Dr. Alka, she is the chairman of the brand, and she is the world-renowned dermatologist in cosmetics. She has also received Best Medical Practice Award from European Medical Association. Or she is also promoted for like Victoria Medal, and she has treated 1.2 million patients in 30 years. So that means 1.2 million people, means that's a huge number in 30 years. तो मतलब जो ह्यूमनली किसी भी एक डॉक्टर की लाइफ में, आई थिंक दैट्स मैक्सिमम जो हमने देखा है कि अभी तक कोई एक डॉक्टर ने कितने पेशेंट ट्रीट किए होंगे। तो आई थिंक दैट्स मैक्सिमम आई हैव सीन इन माय लाइफ। सेकंड थिंग, अपार्ट फ्रॉम द क्लिनिक, हमें डॉक्टर के स्टाफ को कैसे ट्रेन करना है। सो यू नीड अ ट्रेनिंग सिस्टम। So they have also developed an academy, that is AR Academy of Aesthetic Clinic UK, and Dr. Vincent Wong, he is our joint venture partner. तो हमारे जितने भी फ्रेंचाइज क्लिनिक होंगे या कंपनी ओन क्लिनिक्स होंगे, वहां पे जो भी डॉक्टर्स होंगे, दे विल बी, उनको सर्टिफाई किया जाएगा, उनको ट्रेनिंग दी जाएगी AR Academy के थ्रू, एंड दे विल बी सर्टिफाइड। तो उनको एक इंटरनेशनल सर्टिफिकेट भी इशू होगा। और वही डॉक्टर्स हैं जो हमारे जितने भी क्लिनिक चेन होंगे जहां वो दे कैन वर्क एट दिस क्लिनिक्स। ये एक सिंपल एक सैंपल है एक हमारे सेंटर का कि हाउ इट लुक लाइक द क्लिनिक। नाउ वी आर कमिंग, हमारा विजन है एम्पावरिंग डर्मेटोलॉजी। अब उसको एम्पावर करने के लिए यू रिक्वायर रिसोर्सेज, यू रिक्वायर एनर्जी, यू रिक्वायर टूल्स, यू रिक्वायर सिस्टम्स, यू रिक्वायर इंफ्रास्ट्रक्चर। तो डॉक्टर अलका का विजन है कि हम डर्मेटोलॉजी को जैसे आपके ट्रेडिशनल वे में ट्रीट किया जा रहा है, वी वांट टू चेंज द एंटायर थिंग बाय एम्पावरिंग थ्रू टेक्नोलॉजी, थ्रू सिस्टम्स, थ्रू ट्रेनिंग। ये अपने हॉस्पिटल्स में इनके पास इन हाउस फार्मेसीज हैं, ठीक है, और इन हाउस लेबोरेटरीज है, और इन हाउस बेसिकली देयर ओन फार्मा प्रोडक्ट्स है। प्लस पेशेंट को ट्रीट करने के लिए दे हैव डेवलप्ड ऐप आल्सो। सो बेसिकली आफ्टर इवन
कि मतलब जो पेशेंट को एक बार ट्रीट कर दिया, उसको राइट डायग्नोसिस करने के बाद में उसको जो ट्रीटमेंट किया गया है तो उसको फॉलो अप भी उसको किया जा सके. And they have a very strong team for follow up the patient. Right. So strength, as Mr. Rajiv ji already said, they are 100% digital. Their focus is only patient cure. Okay. जो उनका सिस्टम है ऑटोमेटिकली फुली इंटीग्रेटेड है, ऑटोमेटेड सिस्टम से यूनिक ऐप बुकिंग है. Automatic daily reports can be generated from any clinic across India or across the planet as we go along. A regular follow-up with patients. So they have a very strong back-end team to follow up with the patient. And long-term care of the patient that can be taken care by the team. ट्रेनिंग एज वी हैव डिस्कस्ड इन द प्रीवियस स्लाइड कि जो ट्रेनिंग होगा आपके स्टाफ का तो वो ट्रेनिंग है वो AR एकेडमी ऑफ एस्थेटिक UK. वहां से डॉक्टर्स से सर्टिफाइड होंगे. दे विल बी ट्रेन्ड ऑन ऑल प्रोसीजर्स. तो जितने भी ट्रीटमेंट के प्रोसीजर्स हैं ईच कैटेगरी विल बी ट्रेन्ड टू द डॉक्टर्स. ये सर्विसेज हैं, सर्विसेज दैट इंक्लूड्स योर सर्जरीज हैं, लेजर प्रोसीजर्स हैं, स्किन केयर है, हेयर नेल डिसीजेस हैं, ऑल टाइप ऑफ स्किन सॉल्यूशंस हैं, ब्यूटी एंड एस्थेटिक्स हैं, नॉन सर्जिकल प्रोसीजर्स हैं, प्लस दे हैव अ वेरी हाई एंड फार्मा प्रोडक्ट्स. सो दिस हायर एंड फार्मा प्रोडक्ट्स मींस आप आज की डेट में बहुत बड़े इंटरनेशनल ब्रांड्स और ब्रांडेड मेडिसिन हैं. सेम मेडिसिन यू कैन गेट एट अ चीपर प्राइस, but ये लेकिन ज्यादा इफेक्टिव कंपेयर टू द मेनी इंटरनेशनल ब्रांड्स. तो ये एक कोर टीम है. सो वी हैव डॉक्टर विंसेंट, डॉक्टर अलका, मिस्टर राजीव, सरिता, Nikhil is the CFO, and Dr. Shivani, she is the trainer at Mohali Clinic, as well as the basically she is treating patients as well. Dr. Shekha and Dr. Vansika. तो विजन हमारा ये है कि हमने जो डॉक्टर अलका ने जो क्लिनिक जो टेक्नोलॉजी एंड जो ट्रीटमेंट, जो प्रोसीजर्स, जो मेथड और जो सिस्टम्स डेवलप किए हैं, दैट्स शी इज ट्राइंग टू रिप्लिकेट बेसिकली ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड. तो जिससे जितने ज्यादा हमारे पास क्लिनिक सेटअप हम कर सकते हैं, हमारे एंड जो पेशेंट है उसको हम बेटर ट्रीट कर सकते हैं, बेटर फैसिलिटीज प्रोवाइड कर सकते हैं एट अ रीजनेबल प्राइस. अभी हम इंडस्ट्री को अगर देखें कि भाई ये अगर मार्केट साइज कितना बड़ा है, तो डर्मा सेक्टर ही अपने आप में मतलब इंडिया का मार्केट है वो 11,000 करोड़ का मार्केट है एंड स्टिल ग्रोइंग. अगर हम इंडिया को एज ए मेडिकल टूरिज्म ऐसे गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है, इट्स $9 billion इंडस्ट्री. लेकिन ये मार्केट है, ये बहुत बड़ा है. इफ यू कंपेयर इंडिया वर्सेस लाइक यूरोपियन कंट्रीज और अमेरिकन कंट्रीज, तो इंडिया में जो सर्जरीज हैं वो सर्जरीज 10 times चीपर हैं देन योर यूरोप एंड US. तो वी हैव अ वेरी गुड मार्केट, गवर्नमेंट सपोर्ट प्लस टू डेवलप इंडिया एज ए मेडिकल टूरिज्म हब. ऑल अदर मार्केट्स हैं, चाहे वो आपका हेयर रिडक्शन मार्केट हो, हेयर ट्रांसप्लांट मार्केट हो, हेयर रिस्टोरेशन मार्केट है, कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट मार्केट है. सो दीज आर द वेरी लार्ज मार्केट. नाउ वन मोर इंटरेस्टिंग थिंग, अभी हम जो नंबर्स देख रहे हैं, दीज आर द नंबर्स बेस्ड ऑन सम स्टडीज. और जो स्टडीज हैं वो एक पार्शियल सर्विसेज थ्रू की गई हैं, या फिर जो डेटा है दैट इज कलेक्टेड थ्रू द हॉस्पिटल चेन्स, उनको थ्रू ये नंबर्स हैं वो एस्टिमेट किए गए. So there is no reality of the actual market. So real market could be much more larger, 10 times more than what we are seeing in these reports. For an example that you can see in the next slide, skin disorder. अगर skin disorder को आप देखते हैं तो pigmentation, based on a survey like 80% of population है वो pigmentation, they are facing pigmentation. That's hyperpigmentation. Dandruff, acne, dryness, itching, vitiligo, and these surveys are conducted only for the 4 metro cities. We have no clue about the tier 2 cities, tier 3 cities, small towns.
people still hesitate to go to the doctor. They hesitate to visit to the hospitals. They don't disclose these skin diseases. So challenge is very large for India related to dermatology and skin diseases. Again, you can sense from the government initiative and the admissions in the dermatology in medical postgraduate programs. पिछले 5 साल में पीजी में डिमांड जो है dermatology की, that has shot up, and that has become the number 1 choice for the MBBS graduates. So medical experts like who is studying in this the sector, उनको पता है कि आगे आने वाले टाइम में this is going to be a big challenge. So we have to be prepared now. तो और इस सेगमेंट को आई थिंक एड्रेस करने के लिए और मैक्सिमम बेटर ट्रीटमेंट, राइट ट्रीटमेंट एक पेशेंट तक पहुंचाने के लिए आई थिंक डॉक्टर अलका स्किन केयर एंड हेल्थ केयर क्लिनिक इज द राइट वे. टेक्नोलॉजी, machines doesn't make mistake. Humans make mistake. So remove human errors, bring the technology, bring the artificial power of the artificial intelligence to diagnose the patient. So that is the right way. And second thing, Dr. Alka, through their trainings, programs, through the system, she is replicating her 30 years of experience. So your medical expert or after training, he can do the same treatment. As Dr. Alka, she is doing right now after like 30 years of experience and excellence that she has achieved over the years. So that excellence can be passed on to our new doctors. So now what is the strategy going forward? So we are looking for franchisee partners. इसमें franchisee partner हमारे they can opt for एक single unit के लिए opt कर सकते हैं, or if somebody has the good bandwidth, financial bandwidth, they can opt for multiple units के लिए they can opt for. एक सेम सिटी में आप 4-5 हॉस्पिटल भी खोल सकते हैं क्लिनिक, और आप एक क्लिनिक भी खोल सकते हो. अगर आपके पास फाइनेंशियल बेनिफिट्स इतना नहीं है तो यू कैन इन्वेस्ट इन वन क्लिनिक. Dr. Alka again is they are offering two opportunities. एक तो स्टैंडर्ड क्लिनिक है, सेकंड है आपका एडवांस क्लिनिक. एक स्टैंडर्ड क्लिनिक को सेटअप करने में करीब 1500 से लेके 2000 स्क्वायर फीट का एरिया है, और इसका इन्वेस्टमेंट है वो करीब 1.2 CR रहेगा. और इसमें फ्रेंचाइजी फीस है वो सिर्फ 7 लाख चार्ज करते हैं. रॉयल्टी जो ब्रांड को जाएगी वो 15% है. एवरेज ROI है वो आपका 50% प्लस रहेगा. पेबैक पीरियड है 27 मंथ्स है एंड 5 years एग्रीमेंट. एक डिफरेंस है इसमें एडवांस क्लिनिक में एंड स्टैंडर्ड क्लिनिक में. एडवांस क्लिनिक विल हैव अ लेजर मशीन्स. तो ये लेजर मशीन्स हैं, देयर इज वेरी हाई स्टैंडर्ड इंटरनेशनल क्वालिटी मशीन्स, और ये दीज आर इंपोर्टेड फ्रॉम यूरोप. तो इसमें हम चाइनीज मशीन्स वगैरह यूज नहीं करते हैं. वेरी हाई एंड मशीन्स को इंपोर्ट करते हैं यूरोप से, तो दैट हैज द हायर कॉस्ट. लेकिन वो सिर्फ हम एडवांस क्लिनिक में ही रखें. और बट दीज लेजर प्रोसीजर्स कैन बी डन, आपके जो स्टैंडर्ड क्लिनिक है वहां पर भी किए जा सकते हैं. लेकिन वहां पे जो टीम है एडवांस क्लिनिक से, जो टीम है वो जाकर के स्टैंडर्ड क्लिनिक को विजिट करेगी एंड उनको लेजर प्रोसीजर्स करेंगे. लेकिन जो लेजर प्रोसीजर्स की बुकिंग है वो स्टैंडर्ड क्लिनिक पे भी हो सकती है, और उसको एक एक डेट टाइम स्लॉट दे दिया जाएगा कि फॉर दिस डेट वी हैव लाइक 4-5 लेजर प्रोसीजर्स. तो एडवांस क्लिनिक टीम है वो विजिट करेगी और उनको वहां से लेजर प्रोसीजर्स करने के बाद में अपने वापस एडवांस क्लिनिक में आ जाएगा. तो आइडिया ये है कि एक सिटी के अंदर वी वांट कम से कम 8 से 10 क्लिनिक हो, जहां पे हमारे 1 या 2 एडवांस क्लिनिक हो, और बाकी के 6-7 और 8 क्लिनिक हैं वो हमारे स्टैंडर्ड क्लिनिक हो. तो मेरा एक एडवांस क्लिनिक है वो 7-8 स्टैंडर्ड क्लिनिक को भी लेजर प्रोसीजर सर्विस कर सकता है.
यहाँ पर हमारे लिए कोई लिमिटेशन नहीं है कि वी नीड अ डर्मेटोलॉजी एक्सपर्ट ऑफ लाइक 20 years 30 years. नो, यहाँ पे अगर कोई फ्रेश ग्रेजुएट भी है आफ्टर कॉलेज, MBBS है, BDS है और होम्योपैथी डॉक्टर है, they can also start this practice. They have to go through the training. After training and achieving your international certification from AR Academy of UK, they will be allowed to practice. So that is the advantage of this model. Or so if anybody who has the like higher financial bandwidth, they can opt for multiple clinics in a city. Now अभी हम देख रहे हैं कि हमारी मार्केट कौन सी है, तो ये इसमें कई सारे फैक्टर्स को कंसीडर करके ये कंसीडर किया गया है. एक तो हमने देखा है कि GDP, पॉपुलेशन, पेइंग कैपेसिटी कैसी है यहाँ पे इंडिविजुअल की, प्लस एस्थेटिक क्लिनिक है. इन सिटीज में ऑलरेडी काफी अच्छी मार्केट है, तो इन्हीं मार्केट को हम टारगेट कर रहे हैं. लेकिन वी आर नॉट लिमिटेड, इसमें लिमिटेड नहीं है कि बस यही 15 सिटीज के में लिमिटेड है. वी आर ऑल्सो ओपन फॉर Tier 2 and Tier 3 cities. The advantage like Pathankot, Mohali, they are not in the top 15 cities of India, but we are running centers successfully. And the advantage to the patient, जो हम पेशेंट के लिए एक एडवांटेज लेके आ रहे हैं वो ये है, if you look at the consultation fees for dermatology and skin and cosmetic consultations ranges anything from 500 rupees to 3,200 rupees. And there's no guarantee for right diagnosis. So Dr. Alka, they are bringing right solutions for the patients. Consultation charges at 700 rupees. So we are bringing better medical services for our patients at affordable price. And there's no such medical chain in India who is like doing dermatology and cosmetic aesthetic altogether. Not even a single one. Some large hospital chains, they do have dermatology department, cosmetology department, but their consultation fee is very high. This is beyond our basically average person outreach. So that's the biggest advantage and I think change to the society that Dr. Alka Skin Clinic is bringing to the society. Then brand support functions. So of course, they will provide you the complete hand holding and complete support, starting from your location selection, approval, build-up support, interior design assistance, equipment sourcing, staff training, staff hiring, then AI-based diagnostic system. They will provide you video consultation, consultancy facilities will be provided. Sourcing of daily consumables है, उसकी sourcing के लिए they will provide assistance. Skin care products है, so company will provide you the products as well. Operation support, treatment procedures, hospital management software, appointment booking app, so everything will be provided. Yes, as a franchisee partner, आपको जो local market है, you have to do that marketing. In terms of communication support, brand will support it. So website listing, your social media marketing management, everything will be done by the brand. And brand will do the periodic workshops and training at the franchisee clinics. तो जितने भी franchisee clinics होंगे उनमें quarterly workshops होंगे और training programs होंगे to train the doctors on regular basis. So I think that's the very biggest advantage of being a Dr. Alka skin care and healthcare clinic. So with this, I'll end this presentation. Now I'll take you through the financial model. Quickly, we'll give a slight detail on financial modeling as well.
Okay, so I'm going to give you the quick brief. I'm not going to discuss all the details and small nitty-gritty. We have the detailed workings of this model. But if you look at the area, 1600 square feet for a standard clinic and advanced clinic के लिए 2000 स्क्वायर फीट का एरिया चाहिए. रेंटल हमने क्वाइट कंसिडरेबल अमाउंट लिया है, जहां पे 2.5 लाख या 3 लाख रुपए का रेंटल कंसिडर कर रहे हैं, जो किसी भी लोकेशन में आपका दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, कोई भी मेट्रो सिटीज है, वहां पर ये रेंटल है, क्वाइट इजीली अवेलेबल है. अपार्ट फ्रॉम आप एक कैफे भी सेटअप कर सकते हैं, कोई भी थर्ड पार्टी या वेंडर को आप इनवाइट कर सकते हैं इसके लिए, बट दिस इज नॉट इंक्लूडेड इन द मॉडल. ये मॉडल का पार्ट नहीं है. अगर हम इसका इन्वेस्टमेंट देखते हैं टोटल कितना होगा, तो 13 लाख से लेकर के 16 लाख रुपीस आपका इंटीरियर सेटअप में चाहिए. इंटरनल ब्रांडिंग एंड साइनेज 1 से 1.5 लाख रुपए का एक्सपेंस है. बेसिक इक्विपमेंट रहेंगे वो 13 लाख एंड 20 लाख रुपीस का इन्वेस्टमेंट है. जो मेडिकल इक्विपमेंट है वो दोनों फॉर्मेट्स में 45 लाख का है. AI बेस्ड डायग्नोस्टिक सिस्टम है, उसका जो एक्सपेंस है वो 10 लाख रुपीस का है. लेजर मशीन्स हैं जो सिर्फ हमारे एडवांस क्लिनिक में होंगे, दैट इज अगेन एडेड कॉस्ट इज अराउंड 65 लाख. फैट फ्रीज लैब है 6 लाख रुपीस, फैट फ्रीजिंग मशीन 4 लाख रुपीस, फार्मेसी 3.25 lakh, hospital management software 1 lakh rupees, training cost 4 lakh and 6 lakh, international certification around 2 lakhs and 4 lakhs, pre-opening expenses 1 to 2 lakh, and launch marketing budget around 3 lakh. So total investment is of capex is 1.12 crores for a standard clinic, और advanced clinic के लिए है ये करीब 2 crores का है investment. Apart from that, you require some working capital that goes up to 1.6 to 2.6 crores. Once we look at the staff, we need इसमें एक clinic manager, doctor, dietitian, pharmacy, nursing, front office staff, doctor assistants, lab assistant और helper. Total मतलब एनुअल एक्सपेंस है वो करीब 32 लाख है फॉर स्टैंडर्ड क्लिनिक के लिए, और ये 45 एंड गोज अप टू 57 लाख बाय ईयर 5. ये एक स्टैंडर्ड क्लिनिक का एक्सपेंस है. एडवांस क्लिनिक में एक्सपेंसेस स्लाइटली हायर होंगे बिकॉज वी नीड, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा टीम होगी हमारे पास जो लेजर ट्रीटमेंट के लिए होगी. दे विल विजिट स्टैंडर्ड क्लिनिक, तो उसका एक्सपेंस थोड़ा ज्यादा होगा, तो दैट स्टार्ट एट लाइक 44 लाख, और ये 70 लाख तक इसका एक्सपेंस होता है ईयरली. Once we talk about the revenues, तो इसमें रेवेन्यू स्ट्रीम देखेंगे. हमारे स्टैंडर्ड क्लिनिक में 6 रेवेन्यू स्ट्रीम्स हैं, 6 रेवेन्यू स्ट्रीम्स है जो दैट वी कंसीडर, और जहां पे हमारा जो टोटल रेवेन्यू है ईयर का वो 2.2 करोड़ रहेगा. और दिस स्टैंडर्ड क्लिनिक में ये रेवेन्यू जो है 2.26 करोड़, ये बहुत ही नॉमिनल है, बहुत रीजनेबल है. इफ यू आप इसमें से इसी तरीके के एस्थेटिक और स्किन केयर क्लिनिक और भी कई ऐसे ब्रांड हैं जो सिर्फ स्किन केयर ट्रीटमेंट करते हैं, उनके भी रेवेन्यूज देखोगे तो दे स्टार्ट एट लाइक 3-4 करोड़ इजीली. लेकिन हमने इसको बहुत ही कंजर्वेटिव नंबर पे प्रोजेक्ट किया है कि जिसमें आपको कोई चैलेंज ना हो इन नंबर्स को अचीव करने. एडवांस क्लिनिक में यही रेवेन्यूज है मेरे करीब 3.8 करोड़ के अराउंड होता है फर्स्ट ईयर का. Now I will look at the performer. There are 2.26 crores का रेवेन्यू है फर्स्ट ईयर में, goes up to 3.7 crores. इसमें रॉयल्टी 15% है ऑन रेवेन्यू. कॉस्ट ऑफ फार्मा प्रोडक्ट्स है, वी हैव 70% कंसीडर किया है, बट ये 70 से आपको कम रहेगा. दूसरा एडवांटेज ये है कि डॉक्टर अलका जो उनके इन हाउस प्रोडक्ट हैं, जो खुद के प्रोडक्ट्स हैं, उनमें मार्जिन भी स्लाइटली हायर है. उस पर कोई भी ये मार्जिन चार्ज नहीं करते फ्रेंचाइजी से. ट्रांसपेरेंट प्राइस पे उसको ट्रांसफर करते हैं स्टॉक को, बट उनका जो रॉयल्टी है दे चार्ज ओनली 15%. सॉफ्टवेयर लाइसेंस कॉस्ट है, ये आपकी 6 लाख रहती है. दैट्स ये करीब 500 यूरो पर मंथ के हिसाब से. रेंटल है 2.4 लाख है पर मंथ. इलेक्ट्रिसिटी बिल आएगा करीब 50,000 रुपए, 50,000 रुपीज. स्टाफ कॉस्ट हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है. इंसेंटिव स्टाफ के लिए 10% वी हैव कंसीडर्ड. ट्रेनिंग कॉस्ट
जो हमारे क्वार्टरली वर्कशॉप्स होंगे, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होंगे, उसका कॉस्टिंग रहेगा। डायरेक्ट कंज्यूमेबल्स का जो कॉस्ट है वो 15% रहेगा। लोकल मार्केटिंग का बजट है वो हमने रखा है 2%, 1% रखा है सेंट्रल मार्केटिंग के लिए। हॉस्पिटल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर का अगेन 1 लाख रुपीज कॉस्ट है। मेंटेनेंस 10,000 रुपीज पर मंथ, यूटिलिटी 10,000 रुपीज पर मंथ। टोटल एक्सपेंस है आपका फॉर द ईयर 1 1.8 करोड़। So franchisee makes around 43 lakhs in year 1. If you translate that to month-on-month income, it gives me like 3.6 lakh rupees per month franchisee can make. और उसका जो overall payback period है वो 27 months है and IRR है वो 38% होगा. Now similarly we will look at the performer. तो हमारे इसमें हमारे revenues है of course will be higher. रॉयल्टी सेम है, बाकी सारे एक्सपेंस सेम है। यहाँ पे हमारा रेंटल्स है वो इंक्रीज हो जाएगा। लॉजिस्टिक कॉस्ट ये बढ़ जाती है हमारे सब स्टैंडर्ड को लेजर ट्रीटमेंट के लिए ट्रेवल कॉस्ट है। इलेक्ट्रिसिटी बिल इसमें थोड़ा ज्यादा रहेगा, दैट्स 80,000 रुपीज पर मंथ। इंसेंटिव रिमेन्स द सेम, डायरेक्ट कॉस्ट कंज्यूमेबल्स का है दैट्स 15% रिमेन्स द सेम। लोकल मार्केटिंग 3%, सेंट्रल मार्केटिंग 1%। आपका जो मेंटेनेंस चार्जेस है विल बी स्लाइटली हायर इन दिस केस, तो जो आपका 12,000 पर मंथ कंसीडर किया है एंड 15,000 रुपीज पर मंथ। सो माय एडवांस क्लिनिक एक्सपेंस गोज अप टू ये 3.2 करोड़। तो जिसमें आप देखेंगे फ्रेंचाइजी का जो प्रॉफिट है फर्स्ट ईयर का वो करीब 81 लाख है और मंथली टेक होम आपका करीब 6.7-6.8 लाख से स्टार्ट होता है एंड गोज अप टू 15 लाख रुपीस पर मंथ काइंड ऑफ इनकम्स फॉर द फ्रेंचाइजी। पेबैक पीरियड जो उसका रहेगा on an investment of 2 crores, almost near 2 years, and it could be much lesser than 2 years, that we are sure. So with this I will end the presentation. Now I'll request audience if they have any queries. So thank you, Ashok, for the detailed presentation, and in fact such a humble presentation that I'm sure that जो भी सुन रहा है वो एटलीस्ट बेसिक लेवल पे समझ चुका है कि क्या ये जर्नी थी, कहाँ से शुरुआत हुई, क्या क्या सर्विसेज आज इसमें इंक्लूडेड है और क्या क्या आने वाले टाइम में सर्विसेज वो अपने लेवल पे जो है आगे रेंडर करेंगे अपने पेशेंट्स को, राइट? कैसे इसमें हम पैसा बना सकते हैं, कितना इन्वेस्टमेंट है। सो आई थिंक मोर और लेस हम सब चीजें क्लियर है, बट फिर भी मैं कुछ बेसिक क्वेश्चंस पूछना चाहूंगा ऑन बिहाफ ऑफ द ऑडियंस सो दैट वी आर वेरी सॉर्टेड, राइट, एंड ऑन द वे फॉरवर्ड। सबसे ये कि हमारे लिए अगर हम इमीडिएट कैचमेंट की बात करते हैं तो इमीडिएट कैचमेंट कहाँ होगा? व्हाट इज द 5 फर्स्ट पॉसिबल क्लिनिक्स वेयर वी हैव डॉक्टर अलका एंड हर टीम टू बी लुकिंग फॉरवर्ड, राइट, इन द नेक्स्ट 3 to 4 months, जहां पे हम अपना सबसे पहले फोकस रखेंगे, राइट? तो उसके बारे में एक बार मैं जानना चाहूंगा। गौरव, ये क्वेश्चन अशोक जी के लिए कि हमारे लिए? सर आपके लिए। अच्छा, ये मेरे लिए क्वेश्चन है गौरव? जी सर, ये आपके लिए क्वेश्चन है। दिस इज फॉर यू, फॉर यू। So, thank you. And we have done a little bit of brainstorming on this session with Ashok ji. That's the reason I thought the question was उनके लिए है। तो उनका ये ओपिनियन था कि I think we should start with the metro cities first, because for the locational advantage में क्या होगा कि we'll be able to team support हम दे सकते हैं। जैसे दिल्ली में अगर हम 20 क्लिनिक खोलते हैं तो दिल्ली में हमारी टीम चंडीगढ़ से ही उनको सर्विस कर सकती है, राइट? ऐसे हम hub, we can start creating those hubs and then keep expanding towards the other B and C class cities. In fact, however, we wouldn't say that we won't be able to handle B and C class cities, because हमारा experience है B और C में कहीं ज्यादा है comparatively. इतना ज्यादा potential है कि I can tell you कि because we know कि अगर हमारे पास पठानकोट जैसे सिटी में 500 किलोमीटर के एरिया में लोग आते हैं और 20 डॉक्टरों से फेल होके आते हैं, I'm sorry, I don't want to name it, but this is the fact. Abhi last month we were in India and we had a guy who came from England and then he was actually based in India for
couple of years. So he had gone to 10 years से वो बेचारा धक्के खा रहा था. I'm just giving a very fresh example. And the guy just walked in. He says, my brother is there for 10 years. I mean, he came from Birmingham and says, you can please help this gentleman, right? So Dr. Alka looked at the person and he says, ये diagnose 10 साल से नहीं कर पाया, कोई बहुत बड़ी सिटी से बता रहा हूं मैं, right? तो मेरी तो ये लड़की कल की जो है ये diagnose कर देगी ऐसे ही. I mean, it was like a litmus test for our doctors, and I'm very proud to say that Dr. Banshikov did spot diagnosis in a second. And they both of them went into a shock. ये लड़की कल की intern करने के बाद MD, she was MD, not even dermatology, let me tell you, right? She was a MD dental, right? MDS किया था उसने. I mean, having worked with us, I mean, she was able to spot diagnose a person which the other top doctors in India could not diagnose it. They were misdiagnosing as something else, because that's what the power of AI, power of our training is. And we're really proud of it, right? So, and I mean, and secondly, we have been able to see the numbers, in fact, in a big way. So, coming back to the strength of we are very confident about what we are doing. That's why we started with our own clinics first, experimented it, saw that we are still in a better league than people who can't diagnose it, and we are able to help. Plus, we are able to provide highest level of aesthetic services, which others cannot do at the price that we are giving at the moment, right? So yes, Delhi would be a best idea, Bombay, Bangalore, Chennai, and in fact, we have had some offers earlier coming from Bangalore a lot, in fact. So I think with the help of technology, distance doesn't matter to us, because we have developed those systems where the help to the new doctors can be easily given, the training can be easily given via our live seminar webinars, in fact, and the kind of foolproof training session that we have been running, and the system that we have created. We are very confident, but yes, I mean, as per the discussion, it will be okay to start with the metro, but then we don't say, नहीं जी हमने आगरा में नहीं करेंगे और यूपी में नहीं करेंगे. In fact, these hubs have more potential, but yes, distance wise could be one of the reasons, but for us, it doesn't matter to us. We are open to all India opening, in fact, and we have been having patients from all India coming, traveling to our places, in fact, even now. Yes, over to you, Gaurav, question. थैंक यू राजीव जी. मेरा दूसरा क्वेश्चन ये रहेगा कि अगर हम टीयर 2 या टीयर 3 सिटीज को अगर हम टारगेट कर रहे हैं, तो उसमें इन्वेस्टमेंट को हम कुछ सब्सिडाइज कर सकते हैं, या हमारे पास कोई ऐसा ऑप्शन पे हम एक कंफर्ट दे सके इन्वेस्टर को कि वो मेट्रो सिटी के जितना ना इन्वेस्ट करे और एक कम लेवल से स्टार्ट कर सके? बिकॉज पोटेंशियल तो है, लेकिन अगर हम इन्वेस्टमेंट और आरओआई के पर्सपेक्टिव से देखें एक टीयर 2 टीयर 3 सिटी के लिए, तो उसमें हमारे पास कोई मॉडल 2 या मॉडल 3 है हमारे पास? हाँ, हमारे पास दो टाइप से हम कर सकते हैं. एक तो हम कर सकते हैं कि हमारी तरफ से, देखो जब छोटी सिटीज हैं उसमें जो रेंटल्स हैं, वी डन सम होमवर्क कि वो 2 लाख रेंटल नहीं आएगा, तो आपका काफी यू कैन हैव अबाउट 70-80,000 से लोकेशन में आपको अच्छी जगह पे 1500-2000 स्क्वायर फीट का मिल जाता है. नंबर 1. नंबर 2, जो वेंडर्स हैं दे माइट बी स्लाइटली चीपर देन द मेट्रो सिटीज. इन फैक्ट जो हम इंटीरियर्स करते हैं, कि हमारे इंटीरियर्स बहुत ही ज्यादा सिंपलिस्टिक हैं, बट एस्थेटिकली डिजाइंड है. दे लुक सो गुड. दिखने में आपको लगेगा कि 35-30-40 लाख खर्चा कर दिया, जो हम 10 लाख की बता रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल, राइट? वी हैव बीन कॉम्प्लीमेंटेड बाय पीपल फ्रॉम यूके कि आपने तो बड़ा खर्चा कर दिया इसके ऊपर, राइट? So we don't say anything to them. We say, yeah, it takes time and all this. But the fact is, वो कम हो जाएगा. और तीसरी जो बहुत ही अहम बात है, जो I think आप सुनना चाहेंगे, which most of the audience will like to listen to, that is कि हम जो लेजर से सबसे ज्यादा पैसा खर्चा होता है, तो we can send our own team, in fact, to all India level. I mean, because जो lasers होते हैं, they are normally monthly उनकी सर्विसिंग होती है, जो हेयर रिडक्शन की होती है. So normally what we have been doing is we can put up a particular dates. A team can travel all India with the machine, and then they can help them reduce the cost to a large level, in fact.
Secondly, कुछ machines ऐसी हैं, rather than putting the money together all, जैसे 45 लाख रुपीस का हमने एक सिस्टम आपको चाहिए, लेकिन we can start with a less number of machines जो ज्यादा expensive है, वो हम यहाँ से भेज सकते हैं, या थोड़े कम procedure से start करके we can upgrade it in the future. So you can build up your business, in fact, on a scale from, let's say, from 5 to 10, rather than putting all the 100% money at the same time. Have I answered this question? बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो एक हमारे पास अभी क्वेश्चन है कि अगर हम ए सिटीज को टारगेट कर रहे हैं तो वी कैन इन्वेस्ट पार्टली इन द मेट्रो सिटीज, क्योंकि अगर हम औरंगाबाद महाराष्ट्र से देख रहे हैं तो इन्वेस्ट करना है बॉम्बे पुणे वहां जाके नहीं किया जा सकता है, तो इसलिए इसके रिगार्डिंग इनका क्वेश्चन है। सो आई थिंक द क्वेश्चन द आंसर हैज बीन गिवन बाय यू कि हम लोग जो है एक कम इन्वेस्टमेंट से शुरू कर सकते हैं, जो हमारा बंडल ऑफ मशीन्स है, इक्विपमेंट्स सेटअप है, उसको हम यूटिलाइज कर सकते हैं। वी कैन नॉट, it is not important for us to start with a complete laundry list of the equipments, because वो हम sharing में भी काम कर सकते हैं। So I think it solves the purpose of a lot of people who are not basically ready with a huge investment because of any thought process or the resources availability, but still they want to be part of the Dr. Alka clinic. तो aspiration है, लेकिन अगर appetite नहीं है या confidence नहीं है, दो बातें हैं, तो आप इसको कम से भी शुरुआत कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से ये एक बहुत अच्छा आइडिया रहेगा। तो हमारा मैं इसको समरी देता हूँ कि हमने प्रेफरेंस है कि मेट्रो टीयर्स में मिले, लेकिन हम टीयर 2 टीयर 3 सिटी के लिए ओपन हैं, और उसमें हम एक ऐसे सब्सिडाइज मॉडल बना सकते हैं जो हमारे प्रिंसिपल क्लिनिक से टीम को ट्रैवल करके जो है किसी सर्विस देने में आसान, तो हम उस चीज के लिए बहुत ओपन है। इसमें एक क्वेश्चन है सर कि इसमें आपको कोई जरूरी है कि मेडिकल प्रोफेशनल का ही कोई हो, या कोई डर्मा से हो, या कोई इस पर्टिकुलर फील्ड कर सकता है, या कोई पर्टिकुलर प्रोफाइल आप चाहते हो? एनीबॉडी एंड एवरीबॉडी कैन बी अ फ्रैंचाइज टू डॉक्टर अलका क्लिनिक, और अगर वो होगा तो उसमें कैसे टेक्निकल पूरा सपोर्ट सिस्टम रहेगा? देखिए, उसमें हमारा जो कोई फ्रेंचाइज ओनर कोई भी हो सकता है। फ्रेंचाइज ओनर डजंट नीड टू बी फ्रॉम द मेडिकल। इट इज ऑलवेज गुड कि अंडरस्टैंड करता है, बट देन अगर नहीं है देन यू डोंट नीड इट, बिकॉज जो रन करने के लिए जो मैनेजमेंट सिस्टम है, जो टीम है, हम आउटसोर्स करेंगे। वी डेफिनेटली नीड डॉक्टर्स, इनफैक्ट वी डेफिनेटली नीड नर्सिंग स्टाफ, इनफैक्ट उसके लिए होगा, तो वी कैन हायर दोज टू रन द शो। I don't need to be a doctor. For example, I am not a doctor. Let me tell you, I think that answers your question, right? Dr. Alka is the doctor, and she is the one whose brain is being mapped, and then we are using it. And Dr. Alka has been able to create more doctors, in fact. So we don't need the doctors only to be the franchise partner. So it will be good to have them. आपके पिछले क्वेश्चन का एक और आंसर भी है कि जो एग्जिस्टिंग हमने एक ब्रेनस्टॉर्मिंग किया था, जो एग्जिस्टिंग सेटअप है उसको भी हम टेक ओवर कर सकते हैं, उसको अपने ब्रांड से थोड़ा सा कॉस्मेटिक चेंजेस लगा के सिस्टम में करके, एंड उसमें काफी कॉस्ट जो एग्जिस्टिंग लोगों की कम हो सकती है, एंड दे कैन बी पार्ट ऑफ द बिगर, यू कैन से the bigger services, I would say, at a larger scale, with a great support of the line of doctors and teams, and then of course the management systems that we have developed. So वो भी एक ऑप्ट कर सकते हैं जिन्होंने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया हुआ है, और या किसी वजह से they want to do more expansion or want to align with the world class services. राइटली सेड मिस्टर राजीव, क्योंकि आज की डेट में अगर हम देखें तो एक तो हमारे पास ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट की अपॉर्चुनिटी है कि कोई स्क्रैच से स्टार्ट करना चाहता है, बट एट द सेम टाइम अगर कोई ऑलरेडी डॉक्टर है, कोई मेडिकल प्रोफेशनल है, कोई ऑलरेडी किसी तरीके का नर्सिंग होम या हॉस्पिटल या कोई पॉलीक्लिनिक रन करता है, और उसके बाद डर्मा की स्पेशलिटी नहीं है, एस्थेटिक्स की स्पेशलिटी नहीं है, तो वो भी हमारे साथ कोलैबोरेट कर सकता है। दैट विल हेल्प देम टू सेव अ लॉट ऑफ कॉस्ट, एंड बेसिकली दे कैन बिल्ड अ न्यू लाइन ऑफ बिजनेस फॉर देम अंडर द सेम रूफ। तो ये भी एक सेकंड ऑप्शन है जो आपने बहुत अच्छा एड्रेस किया। सो पीपल हु आर लिसनिंग टू अस नीड नो दैट there are two ways to basically be party to Dr. Alka clinic. You can become a partner brand with them. So one, you can start basically from a
from a greenfield perspective, where you are not from the technical side of it, but yes, if you have interest, reputation, money, and property available in your city, right, or anywhere, आप चैट बॉक्स में जो है वो छोड़ सकते हैं अपने नाम के साथ, ताकि हम आपके साथ अपनी लोकल टीम को वहां से कोलैबोरेट कर सकें, आपको अलाइन कर सकें, और उसके बाद वो आपका प्रॉपर्टी एक बार विजिट कर लेंगे, उसकी फोटोग्राफ्स वगैरह, उसका एड्रेस हम शेयर कर देंगे डॉक्टर अलका के साथ एंड राजीव सर के साथ। तो जो भी आपको उसमें कोई डाउट होगा वो 1-on-1 डिस्कशन में क्लियर कर देंगे, और अगर आपकी प्रॉपर्टी ओके होती है तो हम इमीडिएटली इस क्लिनिक को स्टार्ट कर सकते हैं। और आप देख ही रहे हैं कि जिस तरीके के आज के डेट में एस्पिरेशन है लोगों का कि वो दे वांट टू लुक ब्यूटीफुल, दे वांट टू लुक स्मार्ट, एंड दे पैम्पर देमसेल्फ। तो ये एक ऐसी लाइन है जिसमें सिर्फ ऐसा नहीं है कि डर्मेटोलॉजी एक सेगमेंट है, बट एस्थेटिक्स भी एक बहुत बड़ा सेगमेंट है। और एस्थेटिक्स इज ऑल अबाउट हाउ यू लुक एंड हाउ डू यू basically present yourself. And in today's era, we see a lot of people have started spending on themselves, and it is not biased towards any particular segment of the society. चाहे वो males हो, females हो, बच्चे हो, beautiful, they want to look clean, they want to present themselves right. और जितनी आज तरीके की pollution में और जो हमारा बेसिकली आज ईटिंग हैबिट्स है उसकी तरफ से जो हमारे स्किन डिजीजेस हो जाते हैं, तो वो बेसिकली आपको उसका क्योर तो मिलता ही है, लेकिन आपको उसके अलावा ब्यूटी ट्रीटमेंट्स का भी क्योर। तो आपके पास एक ऐसे प्रोफेशनल्स हैं मार्केट में जहाँ पे आपके पास डॉक्टर्स नहीं है, दे वर्क ओनली ऑन द एस्थेटिक्स पार्ट ऑफ योर ट्रीटमेंट। However, on the other side, we have Dr. Alka team which works from a dermatology perspective. So यहाँ पे basically medicine और एस्थेटिक्स दोनों का कॉम्बिनेशन है जो एक आपको प्रूवन रिजल्ट्स देता है। तो बहुत डिफरेंस है इसमें, राइट। और मैं आई डोंट वांट टू नेम दोस ब्रांड्स बिकॉज़ इट विल नॉट बी राइट ऑन माय पार्ट, बट आई एम श्योर दैट यू आर ट्राइंग टू टेल यू इज अंडरस्टूड राइट कि एक ब्यूटी सैलून में जाके बेसिकली अपने आप को आप आर्टिफिशियली अच्छा दिखाना चाहते हो या डर्मेटोलॉजी के पर्सपेक्टिव से आप कुछ बेसिकली अपने आप को बेटर करना चाहते हो, तो दो अलग अलग आपके पास बेसिकली जो है तरीके होते हैं अपने आप। और ये अगर आप अपनी सिटी में सेटअप करते हो 1000, 1200, 1500 स्क्वायर फीट का सेटअप से शुरू करना चाहते हो, छोटी इन्वेस्टमेंट से शुरू करना चाहते हो, तो वहां से भी शुरू कर सकते हो। और अगर आपको कोई क्लिनिक ऑलरेडी चल रहा है, कोई डॉक्टर को आप जानते हो या कोई आप मेडिकल प्रोफेशनल को जानते हो जहाँ पे आपको लगता है कि आप उनके साथ कोलैबोरेट करके इस डर्मेटोलॉजी को, डॉक्टर अलका की क्लिनिक को सेटअप करके उनके साथ बेसिकली एक ट्राई पार्टी एग्रीमेंट जैसा बना सकते हो कि जिसमें आप होंगे, डॉक्टर अलका की टीम होगी और वो डॉक्टर ऑलरेडी अपने रिसोर्सेज से बैठा है, तो ऑर्गेनिक आपके पास कस्टमर बहुत है, पेशेंट बहुत है आपके पास, तो वो भी एक अच्छा फुल प्रूफ प्लान बन सकता है, एंड दैट टू एट अ वेरी लेस इन्वेस्टमेंट। तो मुझे लगता है इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी इन दिस मेडिसिन स्पेस, दिस ब्यूटी एंड वेलनेस स्पेस अभी तक हमने पिछले 6 महीने में लॉन्च किया। पीपल हु आर लिसनिंग टू अस एंड व्यूइंग दिस वेबिनार शुड leave their number, contact details, so that my team can contact you and can help you to align with the team of Dr. Alka, and this is the property resources qualification, we can start working with you and set up the clinic. So Dr. Ashok, Rajiv ji, Gaurav, I would like to add on this. While we were doing financial modeling and strategy, तो मैं आपको बताऊं कि we have looked at the multiple brands, जिसमें कम से कम 10 ऐसे ब्रांड्स और भी हैं जिनको हमने स्टडी किया, हमने उनको कंपेयर किया what they are offering, and I can proudly say none of them is close to Dr. Alka. None of them. I would not name them, so that but you can compare with them, and I think Gaurav, you know, like which I'm talking about, you know. Right. So you can compare, like my audience they can go and see themselves इस कैटेगरी में, यानी कि जो सॉल्यूशंस, जो सिस्टम्स, जो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, जो सेंटर उन्होंने सेटअप किया है डॉक्टर अलका ने, इज कमेंडेबल है, एंड यू कांट कंपेयर दिस, देयर इज नो कंपैरिजन, डजंट एग्जिस्ट, सो इट्स अनप्रेसिडेंटेड, they are pioneering the industry, dermatology industry, that I can say. That is been awarded, nominated as a Victoria Award, which is one of the highest accolade in the globe, right? In terms of the awards that are there, right? So the good work pays not only in terms of money, but in terms of a lot of other earnings that you get, right? So
people who are with us. It's a great opportunity for you to be a part of this journey where you can something very unique. It is not a simple F&B or a FMCG chain or a education. It is basically to deal with the beauty, aesthetics, and derma at the same time. So you have a lot of good things to learn in this business, and this is something where it is not that you're setting up for you, but for your generations. Because there are two professions in the country which I strongly believe are not meant for just one generation. One, if you set up a school. Second, when you set up a clinic or a nursing home. Because these two businesses, right, have a tendency to grow organically year on year basis, provided you are doing the job right, you are doing the service to the nation, and you are actually uh, paying hard work in the initial couple of years of your existence since your inception. उसके बाद तो ये जर्नी ऐसी है कि आपको पीछे मुड़ के देखना ही नहीं है. It will keep on growing, not because of your marketing, but because of many other references that you get because of the work that you have done. और यहाँ अलका का ऑलरेडी प्रूवन चैनल है, प्रूवन हिस्ट्री है और एक प्रूवन पेशेंट बेस है, जो कि नॉट जस्ट इन इंडिया बट ग्लोबली भी है. तो अगर वो देखेंगे आपके डॉक्टर अलका के नेम का बोर्ड लगा हुआ है तो वो रिलेट कर पाएंगे आपसे, और बाय डिफॉल्ट आपके पास एक कस्टमर आएगा. तो इतनी ज्यादा कोई मार्केटिंग की जरूरत नहीं है, इतना ज्यादा कोई आपको टेक्निकल नो-हाउ की जरूरत नहीं है, बिकॉज ऑल दिस विल बी गिवन यू इन अ प्लेटर फ्रॉम द ब्रांड टीम. Gaurav, one of the important point I would like to highlight here is, in fact, you rightly said, I mean, in every city we have a patient. I mean, let me tell you, we have so surprised ourselves when we went. Slightly digital people started finding us. In every country we had the patient, because it's a journey of the last 30 years. That's an advantage. But looking at the other things which probably we haven't been able to discuss it, is I would like to highlight. Number one, for any doctor who is a doctor and is not able to find, is not able to diagnose it, he was definitely looking for the right diagnosis, and he has to refer to PGI or something, I mean, or to All Institute of Medical Sciences, or to, but this is the other way around. We have it. We have All India Institute of Medical Sciences. If anybody goes to medical college in Amritsar, the head of department will send them back to Dr. Alka. So why have you come to me? You should go there. So that is the kind of advantage people are going to have. They're going to have a referral support, which is, they don't need to say, I mean, lose the patient. In fact, they will retain the patient and still have all the revenue back with them. Number two, there are very specialized things which are very difficult to, in fact, or very expensive to handle. In fact, you can't have those expertise. For example, in surgical or non-surgical plastic surgery, for example, rhinoplasty. These are the bigger things, in fact, which need a more of an expertise. So our teams can go to your clinic and help the patient, in fact, restore, for example, the nose, or any kind of plastic surgery that they need, or they need a hair transplant. They can come to any of the clinic. In fact, the revenue stream will not be disturbed. It will be distributed, in fact, number one. Number two, which is number four, which is very, very important, is that we are launching an academy, and our dream of having 100+ centers in India is basically going to help that academy have practice for the new doctors, in fact. So it will be easy for us if we have somebody, I would just say somebody in Aurangabad is there, and then somebody, a doctor, is there. So we want to train them. He doesn't need to then travel all the way to New Delhi or to Bombay. We can tell them, okay, we have a clinic, why don't you go there and have a practice there, right? That way there could be some additional revenue sharing for those clinics as well, because they're going to be part of our clinics, in fact. So these are the few things, and last but not the least, the holistic approach, the meditative approach, and we have kept a kind of a smaller room for actually meditation of the patient. In fact, to give mindfulness thing, we give a corner we are creating called the affirmative corner, where we change the minds of the person, because we believe the root cause of and the cure is always lies in the mind. So we do give a lot of mindfulness kind of takeaways to the people. In fact, they can go back and use at their places, and even when they go back even when they have cured themselves, those tips can be used for their life forever.
so that they don't get sick again. Yes, over to you. So thank you so much. We have, I think, the last question from the audience. Rajiv ji, people are trying to find you on the Instagram. Is it possible that we can have your Instagram page so that we can share it with the people who are asking and exploring you on the social media? Yes, yes, it is there. You have to actually check with Dr. Alka's Skincare and Healthcare. If you check with that, there is an Instagram one. I'll request Dr. Alka to type if she's around still, and then in the chat box so people can find out. It is there in the Facebook as well. It is there on, we have a YouTube channel. In fact, if you go to Dr. Alka Skincare, and these are all linked together. So if you are able to find one, you will be able to find the other one as well. And we have, this is basically a page. So we request audience to please leave their names and their numbers along with the city of their choice where they want to basically explore the opportunity with Dr. Alka. Our team is going to basically connect you with local team is going to connect with you to discuss further on the opportunity, as I mentioned, and we'll be happy to help you, right, to learn more about the opportunity, to learn more about the incomes, the treatments, and the way it is functioning, right? So on that, I thank the entire team who was present here and basically taken out time, and also a warm thanks and thanks note to all the viewers who actually patiently listened to us and were still there with us from last an hour and more, who heard us patiently and who actually gave their time to learn about the opportunity. We'll be happy to take it forward with the brand team and help you set up Dr. Alka Clinic and become part of a leading dermatology and aesthetics business. So thank you so much once again. Mr. Rajiv, any last word for the audience? Yeah, in fact, and there'll be a lot of referral centers around, because lot of our patients travel thanks to the Indian Army. Most of the time they travel from say Chandigarh to Bangalore, from Bangalore to, and recently one of the very dedicated patient moved to Nasik, in fact. So the first question there, do you have a clinic there? I mean, they always ask, right? So, so we will become an automatically reference center to wherever you are moving. In fact, we have a lot of patients who have moved around and they have been looking at new kind of a center for Dr. Alka's there, so that they can get treatment. They don't have to travel all the way long. And in addition to that, we have a video consultation as well, which can be used by those people, in fact. So from my side is all that I would like to say. The only one thing which probably missed was the medical records. So the patient and the doctors will have a permanent medical records. I mean, this is what something very not very unique at this stage, because when we started, it was quite unique. Everybody who comes to a clinic will have a lifelong medical record, and then even if the doctors change or the center changes, it will be accessible to those doctors. It will be accessible to the patient himself. He doesn't have to carry any papers with her. That is one of the biggest advantage we have felt, in fact, and people have come back to us. So now they actually they teach our people, okay, I don't have a slip, but I know you have my record with you, so please check with your record what problem I have, what kind of medication I had earlier. So it is a great kind of service to the humanity as well, in fact, where they don't have to carry they can always ask for it if they don't have it, but they will also be getting a link into their phone numbers so that the medical records are kept with them as well. Thank you. Thank you, sir. So, Harshika, over to you. We are good to go now to conclude. Great. Thank you so much, Dr. Alka. Thank you so much, Rajiv ji, Gaurav Arora ji, Ashok sir, for this wonderful presentation and discussion about the brand Dr. Alka. Friends, you can reach us through our hotline number 9717683838. You can write us on feedback@franchiseindia.in for more inquiries. You can also connect to the LinkedIn IDs of Gaurav sir and Sonia ma'am referred to this slide. Thank you everyone for joining this webinar. We are eager to help you.
Sure, sure.